soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. A year has passed by without the physical presence of the founding principal of our school, Mrs. Mohini Oberoi. Yet her spirit permeates and continues to enrich the lives of the Mira family. An educationist extraordinaire, she belonged to a generation of nation builders who worked hard, quietly, and with determination against all odds, with little resources to work for the community. Imbued with a sense of purpose, she set out to build a school for first-generation learners and constantly strived
to make it the best. Her life lessons continue to inspire us, whether it is in our dress or address, call for duty and diligence, staying true to our cultural heritage, yet tuned to a world vision, always showing up for work with a smile no matter what, being punctilious with our records, documents and forms, learning new ways of teaching and learning, but most of all, loving and connecting with each one of our students and their parents as one big family in the service of this great nation. These values that Mrs. Oberoi instilled in all of us have stood us in great stead during this pandemic. It is this work ethic that taught us to be resilient and adaptive and shift seamlessly into online mode of teaching and learning, which has earned us many plaudits from the student and parent community. On behalf of the staff members and students of the Mira family, I renew our pledge to remain committed to the vision and life lessons that Mrs. Mohini Oberoi taught us and strive to take our school to greater heights. दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक विश्वास बनाए रखना। विश्वास बनाए रखने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान है सपने देखना, कठिन है सपनों को पूरा करना। उससे भी अधिक कठिन काम है, उससे भी अधिक कठिन काम है सपनों को हकीकत में बदलना, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान काम है बात सुनना, कठिन काम है बात कहना। कठिन काम है बात कहना, और उससे भी अधिक कठिन काम है अपनी बात को मनवाना। अपनी बात मनवाने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान काम है हार जाना, कठिन काम है बार बार जीतना, और उससे भी अधिक कठिन काम है बार बार जीतते रहना। बार बार जीतने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो। A great visionary, prolific leader, a great teacher over and above a noble soul. She started Mira Model School from a modest level and helped us to reach greater heights. She had a special bonding and a great affection for the children. She showed motherly love and gave fatherly confidence. Her endless care, guidance, and unconditional support for the development of our school, students, and teachers is legendary. As someone said, it's how we are with one another that will profoundly affect our lives and the lives of people to come. Based on this principle, she laid the foundation of a great academic institution which is known for its high-class education, culture, and values. She was well known in education field for her valuable contribution. She was our pride. I am blessed to have a founder principal like her. We do miss her physical presence, but her teachings and thoughts will remain with us forever. Remembering her in our prayers with thankful heart. Thank you. बड़ी मैम को हमारे बीच से गए 1 वर्ष हो गया है। यह वर्ष अपनी तमाम चुनौतियों के साथ साथ उनकी अनुपस्थिति के लिए भी याद रखा जाएगा। उनकी कहानी की अगर हम बात करें तो उनकी कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने वाली कहानी है। विस्थापन हो या पलायन, हमारे लिए उसे स्वीकारना अत्यंत कष्टदायक होता है। विस्थापन के बाद सबसे मुश्किल होता है अपने सीमित संसाधनों के आधार पर अपने भविष्य की नींव का निर्माण करना। निश्चित रूप से उनके सामने भी यह चुनौती रही होगी। ऐसा समय जब लोग अक्सर टूट जाते हैं
ऐसा समय जब सभी रिश्ते छूट जाते हैं, उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार किया, शिक्षा के इस मंदिर को आधार दिया। इसका परिणाम है यह भव्य इमारत जो हमारे सामने मीरा मॉडल स्कूल के रूप में खड़ी है। जब डर लगता है फासला देखकर, तब भी बढ़ते रहे रास्ता देखकर। मंजिल स्वयं पास आती गई, उनका साहस और हौसला देखकर। तो ऐसा था बड़ी मैम का व्यक्तित्व। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर जो आत्मबल विकसित होता है, वह आत्मबल हमें उनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता था। जिन्होंने संघर्षों को स्वीकार किया है, वे अवश्य मंजिल तक पहुंचे हैं और उनका आत्मबल उनके संघर्ष का साक्षी रहा है। बड़ी मैम के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो उनकी बातों से झरती कोमलता, अपनेपन का एहसास और उनकी आंखों में जो अपार अनुभव था, उसकी गहराई मुझे हमेशा याद आती है। बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठते उनके हाथ, हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की सभी घटनाओं पर पैनी नज़र, समाज में कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व की गहराई और विस्तार को दिखाती है। उनके इस विस्तृत व्यक्तित्व को चंद शब्दों में समेटना या उनके बारे में सीमित शब्दों में कुछ कहना सचमुच असंभव है। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ। कुछ शब्दों के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। समय का पहिया घूमता रहता है निरंतर, प्रेयर व्हील की तरह, लगातार गतिमान रहता है घड़ी के पेंडुलम की तरह। सचमुच समय के पंख होते हैं और उन पंखों के सहारे वह भरता है ऊंची उड़ान। लेकिन ऊंची उड़ान भी तय होती है कुछ छोटे कदमों से। जैसे कतरे कतरे से जुड़ता है समंदर, जैसे बूंद बूंद से भरता है घड़ा। कई दशकों का उनका यह सफर भरा है उनके अदम्य साहस से, उत्कट जिजीविषा से, हौसलों की अनंतिम उड़ान से। धमनियों में बहने वाला लहू जब अपनी गति कम कर चुका था, हृदय की गति भी कुछ मंद हो गई थी, पैरों की पदचाप बदल गई थी हवा की हल्की आहट में, लेकिन उनका हौसला कभी कम न हुआ। जीवन के अंतिम समय में भी मानो उन्हें यही एक चिंता थी कि यह इमारत यूं ही खड़ी रहे, अटल अचल अजय। सुबह की प्रार्थना और छुट्टी की घंटी न रुके कभी न थमे कभी। समय मुश्किल है, लेकिन हम अवश्य लौटेंगे अपने इस प्रांगण में, जैसे दिन भर का थका पंछी लौटता है रात को अपने घोंसले में। एक रिक्त स्थान है जिसे भरना असंभव है। बस इतना ही कहना था कि आपको हमारे साथ कुछ समय और रहना था, एक साये की तरह, मजबूत स्तंभ की तरह, एक अदृश्य डोर की तरह, अपनी ही वाणी की प्रतिध्वनि की तरह। बस इतना ही कहना था कि आपको हमारे साथ कुछ और रहना था। धन्यवाद। Buddy Ma'am, Mrs. Mohini Oberoi. Buddy Ma'am, the mother of Meera Model School, always stood as a banyan tree. Be it any season, be it any situation, no storm could shake her ever. Acted as an umbrella, protecting others from rain and rays. She took challenges as opportunities to do something more, something better. She always tried to rise above the storm and looked at sunshine. A humble soul and a devotee of humanity, she cared about everyone without discrimination. Ma'am lived contented and purposeful life for the school to become good, better, best.
She has taught us the equations, computations, and algorithms of life by setting up herself the true living example. Ma'am worked hard to keep lighting the lamp of true knowledge. Tamso Ma Jyotirgamya. She was as calm as an ocean, edifying with her soft currents and waves, while being polite, mysterious, free and flowing always. She is a lady with a vision, the jar full of wisdom, the fearless and noble warrior. She was like a Mother Earth who gave her life, energy, and time to serve others without asking for anything in return. She has truly lived the example of मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं जो मीरा मॉडल स्कूल की है निर्माता, जिनकी वजह से आज हम सबको ज्ञान है मिल पाता। हाँ, मैं और कोई नहीं, स्वर्गीय मोहिनी ओबरॉय मैम की ही बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक कमरे से नींव रखकर पूरे स्कूल का निर्माण किया, पता नहीं कितने बच्चों को शिक्षा दान दिया। मैम, हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने हर बार कुछ हमें नया सिखाया है, कभी करुणामयी माँ बनकर तो कभी एक अध्यापिका बनकर हमेशा हमें सच की राह पर अग्रसर होने का मार्ग दिखलाया। मैम, आप उस वृक्ष के समान थे जो भीषण ताप सहकर भी पहुंचाते थे छाया। मैम, एक अध्यापिका होने के बाद भी कैसे आपने अपना मातृत्व किस अतुल्य तरीके से निभाया। आपने ना जाने कितने बच्चों के सपने को साकार किया, उनको किताबी ज्ञान के अलावा सामाजिक ज्ञान के साथ भी तैयार किया। आपने हर बच्चे को माँ जैसा प्यार दिया और उनकी सोच को एक नया आकार दिया। स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम जी कहते थे, शिक्षा ही वह हथियार है जो वृक्ष को बदलने की ताकत रखता है। मैम, आपने उस वृक्ष से हमें रूबरू कराया था, पता नहीं कितने बच्चों को दुखी होने पर आपने सीने से लगाया था। कोई भी चकित हो सकता है ये जानकर कि एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके आपने मीरा मॉडल स्कूल का निर्माण किया। पता नहीं कितनी तकलीफें सही होंगी आपने, तभी तो आप बने इतने बच्चों की प्रेरणावान। मैम, आज भी सब करते हैं आपका दिल से सम्मान। स्वर्गीय मोहिनी ओबरॉय मैम को पूरे मीरा मॉडल की ओर से शत शत प्रणाम। A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again, rightly said by Maya Angelou. Mrs. Mohini Oberoi was a great soul who enlightened every one of us from the darkness of ignorance to the light of wisdom, and of course inspired many lives through her strong vision and sharp perspective. An educationist par excellence, her spirit of selfless service and single-minded devotion make her an inspiring role model. I am deeply indebted to Mohini ma'am for her great leadership and the words of wisdom which she used to share whenever I used to go to meet with her in her cabin. I joined MMS in 1998 and she was there in my interview, and I still remember her wish to make our school one of the best in technology in West Delhi. I don't know how much justice I could do to her wish. Being a part of Meera family, I can strongly vouch on one value that I have inherited from her, that is care. Spending my livelihood in Delhi for the last 22 years, which is at a long distance from my hometown, Kolkata, where my parents reside. But you know, I never missed them, as I could always find my parents in her. She had a very good quality as a leader. She would never ask anyone to do a task, but you know, actually all the tasks will be done by default. She always used to take care of my family and emotions, and I automatically would go beyond that extra mile for my students. How can I forget the visit of Mohini ma'am and Sadhna ma'am together to my rented accommodation?
on the birth of my son in 2002. It was a pleasant surprise for me. We were very blessed. Again, in the year 2008, when my new house was built, she was the first person to step into my house and bless us. Truly speaking, she had a great soul. Ma'am, we are really indebted. नमस्कार। एक अनमोल व्यक्तित्व को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अतीत के पृष्ठों को पलटकर देखा तो स्मृति के मानस पटल पर एक विलक्षण व्यक्तित्व अर्थात श्रीमती मोहिनी ओबरॉय मैम की अनेक स्मृतियां अंकित हुई, जिनका विस्मरण कुछ इस तरह ही असंभव है जैसे स्तंभ पर अंकित चिन्ह को मिटाना। श्रीमती मोहिनी ओबरॉय मैम का व्यक्तित्व फूल में छिपी उस गंध के भांति है जो हमारे साथ ना होते हुए भी कर्मठता रूपी गंध से हमें सुवासित करता रहता है। सबके प्रति निष्पक्ष व्यवहार उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता रही है। वे एक ओर जहां लौह के समान दृढ़ निश्चयी थी, वहीं मक्खन के समान कोमल हृदय की स्वामिनी भी थी, जो सदा सौहार्द्रता एवं सद्भावना से सराबोर रहती थी। उनकी स्मरण शक्ति से लोहा लेना असंभव था, असंभव रहेगा। वे विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के कार्य से ही नहीं, अपितु उनकी पारिवारिक स्थितियों से भी पूर्णतः परिचित रहती थी। कर्मठता, निष्पक्षता, संयमशीलता, सुनियोजन और सबसे प्रमुख समय निष्ठता जैसे गुण एक विलक्षण व्यक्तित्व की ही पहचान है। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, पर आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श एवं दिशा निर्देश नित्य प्रति हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने इस विद्यालय को और आगे बढ़ाएं। वट वृक्ष के भांति हमारा विद्यालय जड़ों से जुड़ा रहे और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैले। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी इसकी ख्याति हो। इसी कामना के साथ हम सभी श्रीमती मोहिनी ओबरॉय मैम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। Whenever I think of Meera Model School, the image of Mrs. Mohini Oberoi comes to my mind. Meera Model School is an embodiment of Mrs. Oberoi's ideals. It is the hard copy of her dreams. I met Madam when she was in her prime, a figure of authority, a tough decision maker, yet just and kind. She was someone you never took lightly. Her opinion mattered. As the years went by, I saw Madam getting softer and gentler. She had passed over the reins of this great institution into the able hands of the next generation. Mrs. Oberoi took the passing away of our dear chairman, Sir Mr. K.B. Oberoi, very hard. He was her pillar of strength. Her health gradually deteriorated. Despite all this, she would come to school regularly to guide and bless us. Her very presence on the campus made everything so vibrant and perfect. I remember decorating the school with cards made for her by the children on Founders Day and seeing her beautiful, benevolent smile. As the days went by, she was in a lot of pain, and the end was a release to a better place. I would like to end my reverie with a small poem. God saw you getting tired. God saw you getting tired when a cure was not to be. So he wrapped his arms around you and whispered, "Come unto me." You didn't deserve what you went through, and so he gave you rest. God's garden must be beautiful. He only takes the best. So when I saw you sleeping, so peaceful and free from pain, I could not wish you to come back to suffer that all again. Thank you for guiding us, ma'am. Your life will remain an inspiration for us all. Thank you.
afterglow of glorious sunset colors the sky with flaming hues. Good morning, respected teachers and everyone present over here. Today, I am here to share something about our founder principal, Mrs. Mohini Oberoi, popularly known as Oberoi Ma'am in and around the school. Many of us don't know that she witnessed the aftermaths of partition of India and she stepped in her motherland as a refugee from Pakistan. Here, after marriage, she started to live in Narayana and used to work as an educator with the Salvan group of schools. But there was always a fire in her, a fire that became her aim in life. The educational institution which we all celebrate today as our own Meera family is that fire. She was and will be a life characterized by simple living, absolute dedication, and staunch commitment to provide education par excellence. She worked day and night tirelessly and with sincere efforts. She laid the foundation of her beloved institution on 1st May 1975. With immense integration of speech and action, she transformed the school of bricks and mortar into a living and a breathing space, the Meera. Ma'am, you were like a bright star in the darkest of night who lived a life full of purpose, passion, commitment, courageousness, and of course, far-sighted approach. Oberoi Ma'am, this is an ode to you, truly missed but not forgotten. Your ideas, your values, your beliefs, and your inspirations are very much alive in all of us today. The Meera spirit is a part of us now and always. Thank you. ख्वाबों की नगरी हकीकत बनानी जो है दिन एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझानी जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थकान, चैन की नींदें आती वहाँ, कदमों में जमा जो थकान, चैन की नींदें आती वहाँ, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तान। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। हम तो ना कहते अंधेरा कहता, जुगनू में रहता एक तारा रहता। आंसू मोती खर्चो ना, खामी आकाश समझो ना, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तान। सुन लो ना गलतियों का है कहना, नादानियों में तजुर्बा बैठा, जज्बातों की बातों में ना आना, जज्बाती नजरों को दिखता धुंधला। आंसू मोती खर्चो ना, खामी आकाश समझो ना, इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तान। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, बंदिल बाहों को है खुला सिखाना जो है दिल एक दिन का ये किस्सा है।
अर्चिता, कल रात सपने में मोहिनी मैम दिखी मुझे। क्या बात कर रही है, मुझे भी कल उनकी बहुत याद आई। अरे हम दोनों से प्यार इतना करते थे इसलिए तो दोनों को एक साथ याद आई है। हाँ, मुझे आज भी याद है, एक ही वैकेंसी था और हम दोनों को रखी है उन्होंने। उनको हम पसंद इतने आ गए थे, उन्होंने कहा कि चलो इन दोनों को रख लेते, दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। बट कुछ भी कह नीलम, उनकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन का जो लेवल है ना, वहाँ तक हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। अरे हम कोशिश भी नहीं कर सकते। याद है नेशनल के लिए मैं गई थी एक बार, रोज रात को पूरे मैचेस का हाल पूछती थी, हमसे पूछती थी बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं भेज देती हूँ। इवन फाइनल्स में तुम सबको चीयर करने के लिए भेज दिया था। अरे मैं स्केटिंग की टीम लेके गई थी और मुझे रात के 10 बज गए थे, उन्होंने 10 बजे तक कंटिन्यू फोन करती रही, बेटा आप पहुँचे, बच्चे ठीक है, आप घर पहुँच जाओगे। हमेशा उनको स्कूल के हर बच्चे हर टीचर की इतनी टेंशन रहती थी और हमेशा ये रहता था सेफ एंड साउंड घर पहुँच जाए बस। क्यों, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे हो, चाहे वो एनुअल डे हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो खड़ी रहेंगी और सबको वेलकम करना, सबको बाय करना कि सब कुछ अच्छे से हो गया ना, सब कोई सेटिस्फाइड था ना। विद्यावती में याद नहीं है, इनॉग्रेशन बोल या फाइनल डे वाले दिन बोल हमेशा रहती थी और जब तक रिपोर्ट नहीं चली जाती थी न्यूज़पेपर की तब तक वो घर नहीं जाती थी। सच में। और इवन जब वो बीमार हो गई थी तब भी कमलेश और रमेश भैया उन्हें हमारे रूम तक लेके आते थे। उनको तो स्पोर्ट्स से, मीरा मॉडल स्कूल से इतना प्यार था और स्पेशली रॉक वॉल से। हाँ यार, जब भी देखो हमेशा वॉल के सामने आती थी और जो भी आता था हमेशा बताती थी दिल्ली की फर्स्ट वॉल बनाई है मोहित सर ने। सच में उनकी जो लेवल है ना, वहाँ तक तो पता नहीं, बट लेकिन आज हम एक प्रॉमिस करते हैं। कल सपने में उन्होंने मुझे बोला भी कि नीलम अर्चिता तुम इतना अच्छा काम करो और थोड़ी सी मेहनत करो, जो मैंने सोचा है वहाँ तक पहुँचा दो उसको। हाँ, अब यही कोशिश होगी कि उनकी जो ड्रीम थी ना कि मीरा मॉडल को यहाँ देखना है, वहाँ पहुँचाने की हम सबको कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं और तू तो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि जो उन्होंने सोचा है, जिस ऊंचाई तक उन्होंने अपने स्कूल को लेके जाने का सोचा है, उस तक पहुँचाने की हम दोनों जरूर कोशिश करेंगे। जरूर। थैंक यू मोहिनी मैम एंड थैंक यू मीरा मॉडल। थैंक यू। Your life was a blessing, your memories a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure. We remember our founder, Mrs. Mohini Oberoi, with deep reverence. She was a woman of courage, strong convictions, and compassion. Her aim was to provide a desirable and affordable education to every child. She shaped a vision of academic success for all students and also created a climate hospitable to education. Ma'am has built this school with lot of determination and hard work and modeled it very well. Every brick represents her love and affection towards children and importance to educate them. She was without exception a kind and a thoughtful lady. Mrs. Mohini Oberoi taught us how to be leaders in our own life. She was dedicated to her work, sincere to the core, and simple in life. Ma'am has created a stress-free learning environment for the students. Mrs. Mohini Oberoi was a community-minded person who thinks and cares about other people. She has put her heart and soul to serve the society. She was a dynamic and a disciplined lady with a positive attitude. We will always remember her as a true visionary and a philanthropic lady. We, the students, offer our heartfelt gratitude as a tribute to Mrs. Mohini Oberoi, founder of Meera Model School, who passed away in October 11, 2019. Warm, generous, with a heart of gold, she was truly an amiable soul. Time flies. While the phrase is too short, but the truth in it goes far and wide. I have known Mrs. Oberoi for over 3 decades. What a remarkable lady she was. Be it her quick problem-solving nature or a happy and a clear approach towards life. She has been my source of inspiration in ways far more than one. A master in her subject, she has never shied from her roles and responsibilities in school as well as in her personal life. A pillar of support, she has been a part of some key moments in my life. She became a part of my family
when she came to congratulate me on the birth of my son, who is now a well-qualified engineer. She has always stood by me in all my joys and sorrows. I still remember the day when she welcomed my eldest daughter, Richa, who came to school for her first medical entrance examination. Till the day I met her last, she felt so proud and mentioned about her meeting with my daughter. She has always felt very proud for her and all my other children who are now well-qualified professionals. She has built the school to what it is today with her hard work and persistent efforts. I feel so proud to have been associated with such a dynamic lady and will always hold her close to my heart. I pray for her peace wherever she is and wish that she always looks at us with loving eyes. I miss you, ma'am, and will always do. माना मैम, आप हमारे बीच नहीं, पर आप हमारे दिल में ही तो हो। आप दिखाई नहीं देते, पर एक यकीन है कि आप हमारे साथ ही। मैम, आपकी बातें हमें हमेशा याद आती हैं। आप तो उस मोम की भांति थे जिसने अपना पूरा जीवन हमारा जीवन रोशन करने में लगा दिया। गलत मार्ग पर चलने पर थोड़ा फटकारा तो कभी गले से भी लगा लिया। गुरु, माँ और भगवान सबका किरदार आपने निभाया, सबका सहारा बनके एक साथ चलना सिखाया। सही होने पर थपथपाया तो गलत होने पर डांटा भी। उन नन्हे लड़खड़ाते कदमों को आपने ही तो मजबूत बनाया। मैम, आपकी शिक्षा हमें हमेशा याद रहेगी। आप स्कूल की नींव थे, उसी नींव पर हम बड़े हुए। समझ नहीं थी हमें जीने की, आपने हाथ में जीने का मकसद थमाया। किन शब्दों से आपका शुक्रिया कहें, गुरु को धन्यवाद कहना तो आपने कभी नहीं सिखाया। मैम, माना आप हमारे बीच नहीं, पर आप हम सबके दिल में ही तो हो। Hello everyone, my name is Shuchi Gupta and I was a student of Mira Model School from 1988 till 1998. Currently, I am a research scientist at University of Pennsylvania in United States. Looking back to my schooling years, I want to thank all the amazing teachers who played an instrumental role in shaping a positive attitude towards life. Today, I would like to specially thank our principal, Mrs. Mohini Oberoi, or as she's fondly remembered, Mohini ma'am. I had great memories of her and will always feel fortunate to have known her in my life. She was a strong lady who not only inspired her students to have a positive attitude towards life, but also instilled in them the incessant zest for learning. I had the opportunity of interacting with Mohini ma'am several times, but will share one with all of you today. So when I was in class 3, one day I had a severe stomach pain and had to go to the medical room. The nurse in the medical room gave me some medication and asked me to rest over there. Mrs. Mohini Oberoi was just passing through that room, maybe towards her office, and she saw me lying on the bed there. She approached me, and to my surprise, she sat next to me and started patting my head. And she asked me to go to sleep. What I remember is that she was sitting beside me, I think for more than half an hour, and she did not move till I was in deep sleep. So that was Mohini ma'am for me. From that day, she was not only a principal to me, but also a second mom to whom I could approach any time with any problem and felt that she would take care of it. I was always feeling secured under her love. Mohini ma'am, you will be missed forever, but I also know that you are alive in the heart of your students and will remain with us forever. Thank you everyone. Bye-bye. Hello everyone, my name is Tajinder Singh, batch 2016. I want to take this opportunity and offer my sincere condolences to the Mira family for such a loss.
I've not had many chances to know Mohini ma'am personally, but one thing that I'm very sure of is that her legacy is now in her hands. It is now our responsibility to pay tribute to her and stand up to those values so that we can make her proud. May God bless us all with the wisdom to carry forward, and may she rest in peace. Thank you so much. Warm greetings to the entire Meera family. Today I feel privileged to be talking about one of the most charming and influential person I have ever been around. It's been an incredible journey spending 14 years in the school, and yet the best part about it has been the opportunity to inculcate the morals and values that have been deep-rooted in the Meera family by Mohini ma'am. I can't think of a time when we came back from a tournament or a competition and Mohini ma'am didn't bless us with her wishes. I always saw her trying to be as close as possible to the students for as long as she was here with us. She was always the biggest supporter of talent in our school. It is a big loss for all of us, but I have full faith that the Meera family will continue to successfully carry on her legacy. मेरा नाम कुमलेश राय है। मोहिनी ओबरॉय मैम थे, उनके साथ हमने 6-7 साल रहे। उनके साथ अच्छे लगते थे, बोलते थे बेटा मेहनत करो, फिर भी जब भी आगे आप बढ़ोगे, जितना मन लगा के काम करोगे सबसे आगे पहुंचोगे। मैं भी कहीं से आए थे तो मेरे को बताए, मैम बता रहे थे हम भी कहीं से आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं थे, आज मेहनत किए तो आज इस मकाम पे पहुंचे हुए। धन्यवाद। I think that when we remember Mohini ma'am, we don't think about her in terms of singular events. I mean, she's far too vast to be contained in a single event or a single memory. I think we all have our share of, flashes of memories with her. So I do remember running into her a few times whenever something special happened. I was actually fortunate enough to have her around whenever something special came up. Be it the citation ceremony when I became the head girl, she blessed me. So I was lucky enough to have her blessings along with those of Sadhana ma'am's. And once we were practicing at Sadhana ma'am's office for this Itihas competition lined up, for which we had to author the lyrics as well as compose the song. So she happened to be there, and we gave Mohini ma'am the lyrics for her to approve. So she went through the lyrics and she called me and she said, you don't even know the spelling of the word color. And I was surprised. I was like, how can that happen? So, you know how color is spelled two ways, one in the British way and one in the American way. So I believe the American way is in trend recently only. It may not have been in place when she must have read about it. So I had written it the American way with a single O, not OU. So Sadhana ma'am mentioned at that point of time that Vani, she will not shy away from pointing you out and correcting you whenever and wherever you are wrong. But she will also not shy away from complimenting you and suggesting you better ways to improve whenever you accomplish something. So I think that is one little rendezvous with which I remember having. Hi everyone, I hope everyone is safe and that everyone is doing good. So speaking of Mohini ma'am, I sat in front of her for the very first interview of my life. That was in nursery class, but it was the first ever. So I did my nursery and KG from Meera Brook, and she was the principal there. As kids, we all must have cried before going to school, but I honestly don't even remember crying before going to school because that place made me happy, and the credit for it definitely goes to Mohini ma'am.
the place, Mira Brook, it was always very welcoming for the students. I remember she used to stand in front of the gate in the morning and welcome students with a smile on her face, always with a smile on her face. And when I grew up and I came to Mira Model then, and I remember having a chat with her almost every day. It might be a little chat, but we used to at least say hi almost every day. She used to stand at the reception and smile at me. It just feels so good. And then at the annual day, I was given the role of Mohini ma'am, and I was lucky enough. So when I read the script, the role that was needed to be performed, and it was her life story, Mohini ma'am's life story. And I remember reading the script, and now even when I think about it, I get goosebumps. It is commendable. It is I feel like that I've lived through it because I obviously performed it, but the struggle, the hard work behind the institution, behind our, I call it as my home, Mira Model, behind this institution is something we can't even think of. The struggle, the hard work that is put behind laying this institution, every brick, and it is amazing. And I obviously miss her. I always will miss her. But I feel like that we have Mira Model and we have her. Mira Model is Mohini ma'am. And yeah, this place is our home because of her. So thank you, and we all miss you. As a child, Mrs. Mohini Oberoi underwent this disturbing trauma, but never looked back and flexed the education's aroma. She went to school, college, in every situation. She realized that motivation could only come through education. Holding hand of a partner in life, she moved to Delhi as a strong pillar's wife. Gaining the excellence, she moved to face the world. Worked with many when dreams were big. So various times she happily toiled, but the efforts spent in vain when she couldn't sleep and her heart would fail. The pain, that was the passion, but she was bound to various institutions. One day she broke all the shackles and went to work with Lady Mountbatten, where refugee camps were to be tackled. Finding ray of hope and realizing her dreams, went on a step towards happiness screams. Mira Brook, when established, brought joyful tears. A step towards ladder of success, overcoming fears. A dream, a vision which grew every day and became a mission. Mira Brook, a name in the history spoke, which in those times drove and showed. All the success stories with her motivated looks. Success is how you define. For some it's determination, but for Mira Model School, even to sky it cannot confine. Today it shines so bright, even the bright light can ignite. Motivation, inspiration, respect and aspiration, the three tires to success which keeps our head held high. Isn't it what Mira Model and its spirit signify? Oh, Miss Mohini भी आ गई. Yes, ma'am. Please give your files. Miss Mohini, I'm really impressed. ये लीजिए आपकी files और ये लीजिए check. We hope you'll get success. उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे. ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुले हैं जो पर कहेगी न
नजर लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तू ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुली है जो पर कहेगी नजर लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तू ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है